Hello everyone, मैं हूँ आकाश. You are on VAEDO. Let's learn. In this video, we'll learn about Lorentz Transformation. This is the third part of Spatial Relativity Series. Playlist का link मैंने description में दिया है. You can check there for two prior part of this Spatial Relativity Series. So let us begin. What is Lorentz Transformation? Lorentz Transformation actually defines a mathematical relationship between two frame of reference which are moving with respect to each other with a constant velocity. ऐसे frames को हम inertial frame कहते हैं. So एक conclusion यहाँ draw कर सकते कि you can apply the Lorentz transformation equation only for inertial frames. ठीक है? We cannot apply this for non-inertial frame because non-inertial frame वैसे frames होते हैं जो accelerate करते हैं या फिर rotate करते हैं. So we cannot apply this for non-inertial frame at all. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है वो हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखने को मिलता है. आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्हें मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए ये सबसे बेहतर टूल है. ओके और इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे टाइम ट्रेवल, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. Now it's time to derive this transformation equation. So जो फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना होगा इस डेरिवेशन के लिए वो ये है कि वी हैव टू अज्यूम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, completely inertial frame of reference जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, which are parallel with respect to their x-axis as given in the figure, जैसा मैंने इस फिगर में मेंशन किया है, and it is moving along the x coordinate with constant velocity. Let us assume मैंने एक light source place किया at the origin of a frame of reference, first frame of reference S, and after that ये light beam propagate करती है from the center of that first frame of reference और ये propagated होकर second frame of reference के cross point P पर पहुंचती है. So we can easily conclude the coordinates of that propagated light with respect to S frame, which is X, Y, and Z, and similarly with respect to the S prime frame, which is X prime, Y prime, and Z prime. Now from a simple coordinate formula, we can easily conclude that जो distance light cover करेगी for instant of t time, वो exactly equal होगी x square plus y square plus z square, that equals to c square t square. This is for first frame of reference. Now, in the similar way, for second frame of reference, the distance covered by the light can be given by x prime square plus y prime square plus z prime square is equals to c square t prime square. ये डिस्टेंस हमने सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट कैलकुलेट किया है. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करूँगा, दैट वी हैव मेंशन टी प्राइम फॉर द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटिविटी बिकॉज जो टाइम का परसेप्शन है वो एक्चुअली चेंज हो जाता है विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. One thing is very important to note here that जो y coordinate है और z coordinate है which are perpendicular to x coordinate जिस direction में coordinate की velocity है, so we can conclude that y and z coordinates are completely independent of the transformation. So we can write y equals to y prime and z equals to z prime. So we can conclude from equation 1 and 2 that x square minus c square d square is equals to x prime square minus c square t prime square. Again, for transformation factor, we will introduce the term gamma, which is actually independent of x and as well as t.
So from Galilean transformation, x prime that equals to gamma x minus vt, where v is the velocity of frame of reference and t is the time. Now let us consider अगर हम s prime frame के respect इस coordinate को evaluate करें, then we can write x prime that equals to gamma x plus vt. Now after placing the value of x in the expression of x prime जो कि मैंने पहले mention किया है, we will get the result as x that equals to gamma in whole bracket gamma x minus vt plus vt prime. If we solve it further, we'll get vt prime that equals to x by gamma minus gamma in the bracket x minus vt, or t prime that equals to x by gamma v minus gamma x over v plus gamma t. Or you can write t prime that equals gamma big bracket t minus x over v in the bracket 1 minus 1 upon gamma square. Now putting the value of x prime and t prime from here to the expression x square minus c square t square that equals x prime square minus c square t prime square, we'll get x square minus c square t square that equals gamma square in the bracket x minus vt whole square minus c square gamma square big bracket t minus x over v in the bracket 1 minus 1 by gamma square whole square, or x square minus c square t square minus gamma square x minus vt whole square plus c square gamma square in the bracket t minus x over v and in the bracket 1 minus 1 by gamma square whole square that equals 0. Or at final we may write x square minus c square t square minus gamma square in the bracket x square minus 2x vt plus v square t square whole square plus c square gamma square t square plus x square by v square in the bracket 1 minus 1 by gamma whole square minus 2xt over b 1 minus 1 by k square whole square that equals to 0. This is an arbitrary identity, so coefficient of various powers of x and t must vanish separately. So equating the coefficient of t square, हमें यहाँ पर t square के coefficients को equate करना है to 0. So after that we get minus c square minus gamma square v square plus c square gamma square that equals to 0, or gamma square equals to 1 over 1 minus v square upon c square, or gamma equals to 1 upon square root of 1 minus v square upon c square. So now हमने gamma factor की value derive कर ली है. So after putting these value on different equation, हम easily derive कर सकते हैं value of x prime और t prime, जो कि Lorentz transformation के लिए final transformation equation होगी. Now as we know x prime equals to gamma x minus vt, and हमने gamma की value already derive कर रखी है. So x prime that equals to x minus vt over square root of 1 minus v square over c square. Now similarly t prime that equals to gamma in the bracket t minus x over v in the bracket 1 minus 1 over gamma square. So now हमने gamma की value already derive कर रखी है. So after putting that value, we'll get t prime that equals to t minus x over v in the bracket 1 minus 1 over gamma square, which is divided by square root of 1 minus v square over c square. Or in final, t prime that equals to t minus vx over c square, the square root of 1 minus v square over c square. तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है फॉर टाइम. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के लिए डिफरेंट होगी, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है.
So therefore, Lorentz transformation equations are x prime equals to x minus vt over 1 minus v square over c square, y prime that equals to y क्योंकि हमें पता है perpendicular coordinate transformation नहीं हो रहा, z prime that equals to z क्योंकि again coordinate transformation perpendicular direction में नहीं हो रही, then t prime that equals to t minus vx over c square in the square root 1 minus v square over c square. And in the similar way, हम inverse transformation equation भी apply कर सकते हैं by taking the coordinate in the reference of S prime frame. So inverse Lorentz transformation equation are x prime that equals to x plus vt prime in the square root of 1 minus v square by c square. We can note कि यहाँ पर सिर्फ जो directionality है वो change हो गई. We have mentioned a positive sign here. And y coordinates as it is रहेगी, so it is y equals to y prime, z equals to z prime, and जहाँ तक सवाल t का है, so for t we have t that equals to t prime plus vx over c square in the square root of 1 minus v square by c square. यहाँ भी again हम inverse transformation में positive sign note कर सकते हैं. So this is all about the Lorentz transformation equation. ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेटिविस्टिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं लाइक दिस टाइम ट्रेवल और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनिटी, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक और द क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल. If this video really helped you, so please like, share, and subscribe, and also press the bell icon. Stay safe, stay curious.